Hi friends, welcome to the official YouTube channel of Arihant Academy. I am Mihir Patel, the Maths faculty at Arihant Academy. For more videos like this, please like, share and subscribe. Don't forget to hit bell icon to get updates. In this video, we are going to discuss important theorem of the chapter called definite integration. In this, we are going to discuss four important theorems. So let's start with the first one. The first one is based on one of the very important result of definite integration, which says integration a to b fx dx is equal to integration a to b f of a plus b minus x dx. This is one of the very important property. Now here let's prove this property. Now to prove, I give you one hint. Okay, and with this I'm sure that you'll be able to remember this proof very easily. Don't try to by heart it, let's understand it. Okay, now the hint says that start from RHS. Okay, so we take RHS of this particular result and substitute the term which is in place of x. Okay. Now let me explain this into you in this particular theorem. So let's start with the proof. As I said, what we are going to do, we are going to start with RHS. Okay, so let's take RHS. In RHS, what do you find? You find integration a to b f of a plus b minus x dx, isn't it? Now what my hint says that whatever is in place of x we substitute. So यहाँ पे जो x दिख रहा है, on the other side in place of x, isn't it we find a plus b minus x? So what we do it is we substitute that term. ठीक है? In textbook they have started from LHS and that makes this theorem difficult. So what we do is we take RHS and simplify. ठीक है? So here can I say put a plus b minus x as t. And now we're going to solve as we solve the sums based on definite integration. What we do once we decide the substitution, we differentiate to get dx. Yes, so let us differentiate with respect to x. When I differentiate, what is the value of derivative of constant term? 0. So I get minus x ka derivative 1 and on the other side dt by dx, isn't it? Now let us switch the terms. So I get dx is equal to minus dt. Fine. So your substitution is ready, your dx is ready. We take this value and put it inside the integral. Lekin, since it's a definite integration, isn't it? We need to change the limit of integration. So here, let us change limit of integration. ठीक है ना? यहाँ पे limit of integration को हम लोग change कर लेते हैं. Now when I say that, what I mean by that is your x. What is the lower limit? It is a. What is the upper limit? It is b. यहाँ पे ना lower and upper limit. And these both limits are for x because we are talking with respect to dx. Now everything is going to convert into t. तो मुझे limit भी t का चाहिए. So what is t का limit? Come on, it is b plus a minus x. Isn't it? b हम substitute कर रहे हैं और a plus b minus x, whatever you say. क्या फर्क पड़ता है? ठीक है? चलो x के जगह पे मैं a रखेगा तो what I get b plus a minus a cut. Okay, am I not going to get b? And when I take b, that is upper limit. So what's the value of t? It is b plus a minus b. b get cuts and I get a. So now the lower limit becomes a and the upper limits become lower limits become b and the upper limit become a. Okay. So let us take everything and put it inside the RHS. So what we get in RHS? Integration. In place of a, we are going to write b. बराबर a के जगह पे b आ गया. Now in place of b, we are going to write a. Done. Okay. Then f of in place of a plus b minus x, we are going to write t. तो यहाँ पे आएगा f of t and finally in place of dx we are going to write minus dt. ठीक है? Now we have done one property in definite integration which says integration a to b f of x dx can be written as minus of integration. Let me write it here. Okay, काम करते हैं next में जाते हैं. ठीक है? So we take RHS, therefore RHS is equal to minus of b to a ft dt. This is what you got. Okay. Now here I repeat the property. It says integration a to b fx dx can be written as minus of b to a f of x dx.
मतलब नेगेटिव को जब तुम नेग्लेक्ट करते हो, ओके, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन रिवर्सेस. फाइन. सो कैन वी राइट हियर इट इज a to b f of t dt. Done. And one more thing is here we don't want t on the other side, we want x. So can we change the dummy variable? Okay, change dummy variable. Okay, now when I say change the dummy variable मतलब सपोज क्वेश्चन x में है और उसको हम t में लिखेंगे तो आंसर थोड़ी बदलने वाला है, आंसर तो वही रहेगा. वेरिएबल तो आप कोई भी यूज करो, ठीक है. सो विद दैट कैन वी राइट a to b f of x dx and hence prove LHS equal to RHS. So it's a very simple theorem. Okay, provided you start from RHS. अगर LHS लेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या डालूं. यहाँ पे रेडीमेड प्रेजेंट टर्म है, देखो यहाँ पे whatever term in place of x you need to substitute. Just keep that in mind. ठीक है ना? Fine. चलो, let's move to the next theorem of this group. Now this says integration 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. Now जिनको भी previous proof समझा है, I'm 100% sure ये पूरा proof आप खुद से कर सकते हो. Okay, but if not, then again let me rewrite the hint. What did I say? Property का जब भी proof करो, okay, we consider RHS and substitute the term which is in place of x. ठीक है ना? Just remember this and your proof is over. So let's start now. Proof. I would request if possible हो सके तो आप मेरे साथ बोलना कि क्या लिखना है, ठीक है? Fine. So let us take कौन सा साइड लेने वाले, LHS की RHS. So we are going to start with RHS. Okay. चलो RHS ले लो. So what I'm going to write 0 to a f of a minus x dx. अब मुझे बताओ x के जगह पे क्या दिख रहा है. So in place of x we are seeing a minus x. So can I say put a minus x is equal to t. Substitution decide हो गया. Now what we are going to do? We are going to differentiate with respect to x. What is derivative of a? 0. X का derivative 1 and t का derivative dt by dx. अब इसको अरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा? dx is equal to minus dt. So dx ready, your substitution ready, but since it's a definite integration, we need to change the limit of integration. ठीक है ना? Whenever you do substitution in definite integration, हमको limit of integration बदलना पड़ता है. So what is the lower limit of x? It is 0. Upper limit a. And what's the substitution by the way? The substitution is t is equal to a minus x. Now in place of x, if I put 0, I get a. In place of x, I put a, I get 0. So now the lower limit will be a and the upper limit will be 0. Okay? Now let's take all the results and substitute in RHS. So what do we get here? Lower limit is a, upper limit is 0. Then f of इसके जगह पे क्या आ जाएगा? t आ जाएगा. ठीक है ना? So I get here f of t. And in place of dx, I'm going to write minus dt. And just like previous proof, can we take this minus outside? So, आपका RHS क्या हो जाएगा? RHS will be minus of a to 0 f of t dt. Done? Now tell me कौन सा रूल अपने को दिमाग में आ रहा है? Okay, limit of integration को change करने वाला रूल which says अगर मेरे पास integration a to b fx dx है, so then it can be written as minus of b to a fx dx. Fine. What it says that negative को जब remove करते हो, so आप limit of integration को flip कर सकते हो. So let us flip that. So what do you get here? Lower limit 0, upper limit a, f of t dt. And at the end, is it we want t or we want x? So we want x. So can I say changing dummy variable? Changing dummy variable. ठीक है ना? जैसा मैं dummy variable को t को x बना देगा 0 to a f of x dx, and with this I got LHS equal to RHS, hence proved. So the first proof and the second proof are exactly same thought process wise. है ना? स्टेप भी देखो सेम ही है, खाली उसके सब्स्टिट्यूशन डिफरेंट है. फाइन. चलो अगर ये दो प्रूफ आ गया तो आई थिंक नेक्स्ट वाला भी आप मैनेज कर लोगे. ओके. The next proof says 0 to 2a f of x dx is 0 to a f of x dx plus 0 to a f of 2a minus x dx. Now here also the hint remains same. What was the hint for the previous two theorems? It was to take we start from RHS and substitute
the term which is in place of x. the same concept, मतलब तुम्हारे तीनों प्रॉपर्टीज अब यही फंडा से प्रूव कर लोगे. ओके, आरएचएस लेना है and substitute the term which is in place of x rather than taking LHS. टेक्स्ट में क्या किया है, LHS लिया है. ठीक है, and that makes it slightly tricky. Okay, done. तो let us start with the proof. Tell me कौन सा साइड लेंगे. Let us take RHS. ले लिया RHS. RHS क्या है, 0 to a f of x dx plus 0 to a f of 2a minus x dx. Now जरा हिंट को जरा वापस एक बार पढ़ो ना बेटा. हिंट में क्या लिखा है, we start from RHS. चलो RHS ले लिया and substitute the term which is in place of x. So if you see that, tell me जो पहला टर्म है उसमें कोई प्रॉब्लम दिख रहा है क्या? The answer is no because you are already having fx. तो उसको हम हाथ नहीं लगाएंगे. ठीक है, we'll focus on second term only. And now tell me x के जगह पे क्या दिख रहा है, 2a minus x. तो हम क्या करेंगे, उसको substitute. And once that is decided, just follow the normal differentiation के steps. The proof will be over. ठीक है, let's see. तो मतलब इसमें क्या खाली ध्यान रखना है, how it is different from the previous proof, that here there are two parts, जिसमें से एक पार्ट को हाथ लगाना नहीं है because you already got fx there. ठीक है, चलो तो हम लोग पहले पार्ट को हाथ नहीं लगाते. ओके, सॉरी. सेकेंड पार्ट में just now as I decided we are going to put what, 2a minus x as t. बराबर. Please mention here only in second integral. Okay, first integral को हमको हाथ नहीं लगाना, it is only for the second integral. Now let us differentiate with respect to x. So what is derivative of 2a? 0. What is derivative of x? 1. T का derivative dt by dx. So what I get here, dx is equal to minus dt. माइनस को मैंने वहां पे फेंक दिया. ठीक है, so with this हमारा second integral हम rewrite कर सकते हैं. लेकिन as I said in the previous two proofs also, since it's a definite integration, we need to change the limit of integration. So what is lower limit of x? It is 0. What is upper limit of x? It is a. What is the substitution? T is equal to 2a minus x. ठीक है, अब x के जगह पे क्या रखोगे, 0. So I get 2a minus 0 which is 2a. So now the lower limit becomes 2a, and if I put x के जगह पे a, I get 2a minus a which is a. So the upper limit remains a. ठीक है, ये सब चीज को उठा के हम रिप्लेस कर लेते हैं. So RHS, what do we have here? 0 to a f of x dx बराबर प्लस लोअर लिमिट क्या होगा, it would be 2a, upper limit a, and here what I got, f of t into minus dt. ठीक है, चलो जस्ट लाइक प्रीवियस ईयर हम लोग माइनस को आगे लिख लेते हैं. सो RHS इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म को हाथ लगाने का नहीं है, देन आई टुक माइनस आउटसाइड. कम ऑन, दिख रहा है ना, ये माइनस को मैं यहाँ पे लेगा तो नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, सो व्हाट आई गेट हियर इज माइनस ऑफ, लिमिट क्या था, 2a to a f of t dt. ठीक है, अब ये माइनस को मुझे एलिमिनेट करना है. तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी सेज, अगर मेरे पास a to b fx dx है, देन आई कैन राइट दैट माइनस ऑफ b to a f of x dx. दैट इज व्हेनेवर यू रिमूव नेगेटिव साइन, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा. ठीक है ना, आई बेटर से रिवर्ट हो जाएगा. ओके, सो 0 to a f of x dx, ये प्लस हो गया, एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंजेस फ्रॉम 2a to a से लेके a to 2a हो जाएगा, f of t dt. अब मुझे बताओ t चाहिए कि x चाहिए, तो we want x. So can I say changing the dummy interval, sorry changing the dummy variable. ठीक है ना, चलो डमी वेरिएबल को बदल दो, तो t के जगह पे I put x. Now ideally आगे के दोनों प्रूफ यहाँ पे खत्म हो गए थे, बराबर. Here we have not got the answer, but not to panic. यहाँ पे खाली एक स्टेप और ऐड करना है. अगर आप देख रहे हैं तो इज नॉट योर फंक्शन f of x dx इज सेम, बराबर, तो उसको हम साइड में रख लेते हैं. एंड नाउ जस्ट लुक एट द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन. सो इफ यू सी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट, हियर आई फाइंड 0 to a and here I find a to 2a. So there is one property which says that when you are going from a to b, okay, and b to c, fine, so this b is connected. So what you can write that integral as, a to c, provided your function is same. यहाँ पे तो फंक्शन सेम है. So can we write this result that we know that a to b fx dx plus b to c fx dx can be written as a to c fx dx, but provided your b has to be between a and c. So here if you see, your a obviously has to lie between 0 and 2 है ना,
ठीक है. So with that what you get finally 0 to 2a, lower limit 0, upper limit 2a, a को गायब कर दिया and you get fx dx and LHS equal to RHS and proof. So इसमें अगर आप देखें तो खाली एक स्टेप हमने ऐड किया एंड फर्स्ट स्टेप में क्या ध्यान रखना था, where you already got fx then why to touch that, उसको साइड में रखो, ठीक है. So this all three results or proof, okay, are based on one simple hint which says that we should start with RHS and replace the term which is in place of x, ठीक है. Let's take the last proof of this particular group. Again, it's based on one of the very important property of definite integration, which says minus a to a fx dx is 2 times 0 to a fx dx when the function is even, and if fx is odd then it is 0, ठीक है. चलो, now here थोड़ा सा ट्विस्ट है. एक्चुअली ये मेन रिजल्ट से स्टार्ट होता ना तो द प्रीवियस 3 थियरम्स के कॉन्सेप्ट का हम यूज कर सकते थे. एंड व्हाट वाज दैट, वी स्टार्ट विद व्हिच साइड, LHS की RHS. सो वी स्टार्ट विद RHS. तो यहाँ पे भी हम RHS लेते थे एंड वी कुड हैव सब्स्टिट्यूटेड द टर्म व्हिच इज इन प्लेस ऑफ x. बट यहाँ पे आप देखो आपके पास ऑलरेडी x है तो यहाँ पे वो हिट काम नहीं करेगा, ठीक है. हाँ, बट अगर इसका ओरिजिनल रिजल्ट होता इवन ऑड फंक्शन के प्रॉपर्टी का देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट. तो ये थियरम में हम लोग कंपलसरी LHS से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है. सो हिंट में आई एम राइटिंग इट हियर. हिंट नंबर 1, स्टार्ट फ्रॉम LHS एंड split limit of integration. Just remember that. Okay, that is, ये भी आप बाहर कर लो. माइनस a to a जो था ना उसको हम लिखेंगे माइनस a to 0 and 0 to a. Just keep that in mind. Done. And number 2, where you have minus a to 0, okay, put t is equal to minus x. I better say x is equal to minus t. Sorry, put x is equal to minus t. ये आपका सब्स्टिट्यूशन है फिक्स. डन. बस ये दो चीज करो तो आपका प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा. एंड फाइनली एक डायरेक्ट रिजल्ट आपको पता होना चाहिए इवन ऑड फंक्शन का. इवन फंक्शन, इफ यू नो, इट सेटिस्फाइज वन रूल व्हिच सेज f of x, I write it this way, f of माइनस x अगर आपको दिखता है तो फॉर इवन फंक्शन इट इज f of x. एंड इफ यू हैव एन ऑड फंक्शन, ओके, प्लीज रिमेंबर f of माइनस x इज माइनस ऑफ fx, ठीक है ना. तो ये आपको 3 हिंट याद रखने पड़ेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर प्रूफ. हाँ, इसका RHS में अगर x के जगह पे कुछ और होता तो हम लोग टेक RHS एंड सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ. अगेन इट्स नॉट टफ, ये बस 3 हिंट याद रखो आपको आंसर आ जाएगा. सो व्हाट आई सेड, कौन से साइड से स्टार्ट करना है, LHS की RHS, तो LHS ले लिया. व्हाट इज दैट, माइनस a to a fx dx. नाउ रीड हिंट नंबर 1 एंड टेल मी व्हाट आई सेड. वी नीड टू डू माइनस a to a को स्प्लिट करना है, तो लेट अस स्प्लिट नाउ. कैन वी से माइनस a to 0 f of x एंड द सेकंड पार्ट वुड बी 0 to a f of x. चलो स्प्लिट हो गया. अब कौन से पार्ट को हाथ नहीं लगाना है, तो रिजल्ट नंबर, सॉरी, हिंट नंबर 2 देखो. It says that you should touch this part and not this. इसको हाथ नहीं लगाना है. Okay, so let us substitute only in the first integral or second integral, only in the first integral. So we say put x is equal to minus t. Please mention only in first integral. ठीक है ना. चलो खाली फर्स्ट इंटीग्रल के लिए ही करते हैं. Now what I should do, differentiating with respect to x as usual. Derivative of x is 1. t का डेरिवेटिव is dt by dx. Can we take dx up? Yes. So dx is equal to what? Minus dt. तो ये उठा के रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है. बट सिंस इट्स अ डेफिनेट इंटीग्रेशन वी नीड टू चेंज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ऑल्सो. सो व्हाट इज x का लोअर लिमिट, कम ऑन, व्हाट इज x का लोअर लिमिट, माइनस a. व्हाट इज x का अपर लिमिट, 0. हम लोग किसको रिप्लेस करेंगे, t विद, सॉरी, x विद माइनस t. तो कैन आई से t इज माइनस x, है ना, बात तो वही हुआ. ओके, सो नाउ टेल मी यहाँ पे क्या आ जाएगा. इफ आई पुट माइनस a आई गेट माइनस ऑफ माइनस a विच इज प्लस a, ठीक है ना. और अगर मैं 0 रखूंगा तो यहाँ तो 0 ही मिलेगा.
So now let's take all this result and substitute in the first integral. So in place of minus a, tell me what you're going to write. A बराबर है, यहाँ पे दिख रहा है 0 की जगह पे 0, x के जगह पे माइनस टी और dx के जगह पे माइनस टी. ठीक है ना, एक एक करके सब रिप्लेस कर देंगे. सो विद दैट चलो ठीक है. सो लेट मी राइट हियर LHS इज इक्वल टू, हाँ, सो माइनस ए की जगह पे क्या रखने वाले हम लोग, a. ओके, 0 के जगह पे 0, x के जगह पे माइनस टी एंड हियर यू हैव माइनस डी टी बराबर प्लस सेकेंड इंटीग्रल को तो अपने को हाथ नहीं लगाना है, इट इज 0 to a fx dx. चलो डन. वापस अब मुझे बताओ यहाँ पे इज नॉट माइनस को हम बाहर लेंगे, a to 0 f of minus t dt and here you have 0 to a f of x dx. So tell me in the first integral, do you see a property a to b fx dx can be written as minus of b to a fx dx. So let us remove that negative sign and change the limit of integration. So it becomes what? 0 to a f of minus t dt done plus 0 to a f of x dx. अब एक इंटीग्रल t में है, एक x में है, कैसे चलेगा? सो एक काम करते हैं, डमी वेरिएबल को चेंज कर लेते हैं. ओके, चेंजिंग द डमी वेरिएबल, चेंज डमी variable. Okay, now if I do so, tell me what I get. I get 0 to a f of minus t plus, sorry, not f of minus t, now we can write it as f of x dx plus 0 to a f of x dx. चलो यहाँ तक हो गया. अब लास्ट पार्ट, टेल मी इज इट नॉट इंटीग्रल सेम है दिस टाइम? फंक्शन सेम नहीं, इंटीग्रल सेम है. तो अगर इंटीग्रल सेम है तो इंटीग्रल को कॉमन ले लेते हैं. सो व्हेन आई टेक इंटीग्रल कॉमन, व्हाट आई गेट इज 0 to a bracket f of minus x plus f of x dx. डन. तो यहाँ पे आपका LHS का एक रिजल्ट आ गया ना. इसको अपने को दो पार्ट में डिवाइड करना है. ओके, ऑड एंड इवन. सो नाउ हियर लेट मी राइट दिस रिजल्ट ए हो गया. ठीक है, सॉरी, आई से इफ, आई राइट ऑन द नेक्स्ट पेज ओनली. अभी रिजल्ट ए को ध्यान रखना. ठीक है, नाउ आई से इफ f of x is an odd function. चलो क्या बात हुआ था हमारा odd function के लिए? Hint number 3 says, if you read my hint number 3, what was the odd function का property? It says f of minus x can be written as minus of f of x. ठीक है ना. तो यहाँ पे हमारा जो LHS था, sorry, let me write the result again. Odd function, then f of minus x is equal to what? Minus fx. done. चलो तो हमारा जो LHS था, what was that? 0 to a. दिख रहा है रिजल्ट नंबर 1 और सॉरी a. in that f of minus x जो दिख रहा है, I'm going to replace it with minus fx. yes, तो यहाँ पे आ जाएगा minus fx plus fx the whole dx और ये कट हो गया और आंसर इज 0. तो इवन में 0 आ गया. ऑल्सो okay, if fx is an even function, चलो help me with even function का property. even function, then in result number 3 I said f of minus x is fx. अब यही चीज को LHS में रिप्लेस करते हैं. so what do I get? 0 to a f of minus x के जगह पे क्या आएगा? f of x plus f of x the whole dx, and this time it will get added. so what I get? 2 times 0 to a f of x dx and we got LHS equal to RHS. Hence proved. ठीक है ना. So with this we have done with the 4 important theorems of your definite integration, where in the first 3 what we have studied and how to remember, I said take RHS and replace the term which is in place of x. Just remember that and your proof is over. But in RHS, if you even find fx का fx only, like in the last result proof, sorry, even odd wala property, so then in that case you need to take LHS compulsory, there is no choice, and we split the limit of integration. Just keep that in mind. Split करने के बाद okay, fx वाले को हाथ नहीं लगाना है, sorry, minus a to 0 जो था उसमें x के जगह पे minus t डालना है. मतलब I repeat, last proof becomes very simple if you just remember the hints. तो पहले hints को 2-3 बार पढ़ लो, समझ लो, and then go for the proof. I'm sure आपको रटना नहीं पड़ेगा. Okay, thank you so much. We are done with this particular set. Thank you.